Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are fine. This is session 1 of class 5. I am Miss Siram, your social studies teacher. Today we will start new chapter number 4, the polar regions and exploration, from unit number 2, geography of Pakistan. Today we are going to start new chapter, the polar regions and exploration. So open your book, page number 25. Let's start reading. The polar regions and exploration. The polar regions are the areas of the earth around the North Poles and the South Poles. They are found within the Arctic and Antarctic circles. These areas are so remote and the climate so harsh that people do not go there very often. They were the last areas of the earth to be explored. The history of these regions is very exciting. Many expeditions have taken place and people have had great adventures trying to reach the two poles. Exploration is the act of investigating unfamiliar places. So students start polar regions and exploration. Today we will discuss about the polar regions and exploration. So first I will describe polar regions. Polar regions means कुतुबी इलाके, यानी कि the polar regions are the areas of the earth around the north poles and the south pole, यानी कि ज़मीन के वो इलाके, ज़मीन पर जो वो इलाके जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स हैं, जो साउथ पोल्स पर लोकेटेड है, दे आर फाउंड विद इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, जिसको हम जो आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल में हम उन्हें तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके साथ जो है एरियाज, उन्हें पोलर रीजन्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. Now we will learn about the climatic zone which was unexplored and undiscovered for a longer time than any other part of the world. These are the polar regions. Point these out on the globe, the areas around the north and south poles, latitude 0 degree north and south. Understand? These areas are so remote and the climate so harsh that people do not go there very often. यानी कि वो एरियाज जो यहाँ से बहुत दूर हैं, जिनका क्लाइमेट, जिनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा क्या है, अनकाइंड है, इल मैनर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी तरह भी मौसर नहीं है, फ़ायदेमंद, दैट पीपल डू नॉट गो देयर वेरी ऑफन. इसलिए पीपल वहाँ पर, लोग जो है वो वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर दराज के एरियाज हैं. दे वर लास्ट एरियाज ऑफ द अर्थ टू बी एक्सप्लोर्ड. Student, that the regions are so underdeveloped and the climate so harsh that it excites our curiosity about it. People have gone there on expeditions in the past, यानी कि जो लोग जाते थे वो अपने एक्साइटमेंट में जाते थे वहाँ पर, एक जोश के साथ वहाँ पर एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर मीन से कुछ खोजने, तलाश करने, उन जगहों पर वो जाते थे. दैट इट एक्साइट्स अवर क्यूरियोसिटी अबाउट इट. उनको क्यूरियोसिटी होती थी, एक जुस्तजू होती थी कि इधर क्या है, ये कौन से प्लेसेस हैं कि जो वहाँ पर है. पीपल हैव गॉन देयर ऑन एक्सपीरियंस, but many have died on their way or before coming back to civilization. लेकिन क्या होता था, इनमें से कुछ लोग जो थे वो मर जाते थे वहीं पर, और their way और before coming back to civilization, और कुछ जो आते थे तो वहाँ की कुछ civilization यानी कि लेकर आते थे. The polar regions and deserts are two of the most inhospitable places on earth. और ये हमारी अर्थ पर जो है वो two most inhospitable places में, यानी कि गैर मौसर, यानी कि बेफायदा प्लेसेस है कि जिसे हमें कोई फैज़ नहीं होता. द नॉर्थ पोल इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज नोन एज द एंटार्क्टिक सर्कल. अंडरस्टैंड?
And people, exploration is the act of investigating unfamiliar places. Exploration means क्या है? कुछ खोजना, तलाश करना, और वो क्या करते थे? Investigating means investigating means है छानबीन करना, और unfamiliar means है यानी कि गैर मानूस, यानी कि अजनबी बेगाना जगहों की प्लेसेस की वो क्या करते थे? उनको यानी कि बहुत जस्तुजू होती थी, वो अपनी जान खतरे में डालकर पीपल हैव हैड ग्रेट एडवेंचर्स ट्राइंग टू रीच द टू पोल्स। और लोग क्या करते थे कि वो अपनी जान जोखों में डालकर वो कोशिश करते थे कि वो उन टू पोल्स तक पहुंचे और वहाँ पर कुछ खोजें, तलाश करें कि वो कौन सी जो गैर मानूस जगह है कि आखिर वहाँ पर क्या है। अंडरस्टैंड? Okay, students, continue this topic, the polar regions and exploration. Let's start reading. As well as learning about the polar regions, we will also discover more about explorers and exploration in this lesson. जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, द पोलर रीजन्स के बारे में हम जान रहे हैं, तो उतने ही हम आगे मज़ीद इसके और डिस्कवर करेंगे किसके एक्सप्लोरर्स के बारे में और एक्सप्लोरेशन के बारे में इस चैप्टर में. अंडरस्टैंड? विद इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स द सन रिमेन्स बिलो द हॉरिजन इन midwinter. It is dark all day and all night. In midsummer, although it is extremely cold, the sun remains above the horizon all the time. This is why these regions are called the land of the midnight sun. जैसे कि the North Pole is also known as the Arctic Circle and the South Pole is known as the Antarctic Circle. Understand? So the sun remains below the horizon in midwinter. Because of the tilt of the Earth's axis at 23.5 degree, the polar regions have prolonged periods of sunshine and darkness in summer and winter. क्योंकि जो हमारा अर्थ, इट मीन्स जो हमारा अर्थ महवर है, अर्थ एक्सिस जो है वो किस पर होता है? 23.5 पर, पोलर रेंजेस पे जो है वो झुका हुआ होता है, उससे यानी कि उस तरफ होता है, उसका टिल्ट यानी कि टेढ़ा उस तरफ. तो है प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ सनशाइन. तो इस वजह से क्या होता है कि भी जो दौरानियाँ होते हैं पीरियड सनशाइन या डार्कनेस का इन समर एंड विंटर में, ये क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है. द सन रिमेन्स बिलो द हॉरिजन इन मिड विंटर. कि जो मिड विंटर होता है उसमें क्या होता है, सन जो है वो अपने उसमें छुप जाता है. एंड एवरी मिड विंटर में यहाँ सूरज निकलता ही नहीं है और इसे पोलर नाइट कहते हैं. यहाँ हर वक्त रात रहती है. इट इज़ डार्क ऑल डे एंड ऑल नाइट. In midsummer, although it is extremely cold, the sun remains above the horizon all the time. यहाँ आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल होने की वजह से सूरज जो है सन जो है वो अपने पूरे 24 आवर्स जो है वो पूरे नहीं होता उसका, क्योंकि यहाँ कुछ डेज ऐसे भी होते हैं जब सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आता. इन डेज को पोलर डेज कहते हैं या और पोलर नाइट्स भी कहते हैं. हर साल एवरी मिड समर में गुरूब आफ्ताब जो होता है, सनसेट होता ही नहीं है मिड समर में, हर साल मिड समर में. जबकि इसके अपोजिट जो है मिड विंटर में यहाँ सूरज निकलता ही नहीं है और यहाँ हर वक्त रात रहती है. सो दिस इज वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. अंडरस्टैंड? इसीलिए यहाँ पर हर वक्त क्या रहता है, पोलर नाइट का राज रहता है. अंडरस्टैंड? Okay, students, come to the next topic, the Arctic. Page number 25. The Arctic. The Arctic includes parts of Greenland, Norway, Sweden, Finland, Russia, the USA, and Canada. Around the North Pole, there is a vast area of the ocean called the Arctic Ocean. This ocean is not like other oceans of the world. It is so cold here that the water is covered by ice and snow. The surface of this ice cap looks like land. It has high ridges and deep crevasses. During the summer months, much of the ice on the edges breaks away from the ice cap. Huge icebergs float in the ocean, making it very difficult for ships to pass. Temperatures in the Arctic for most of the year are below minus 23 degrees centigrade.
जी स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे द आर्टिक मीन्स। द आर्टिक क्या है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिक जो है द नॉर्थ पोल इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिक सर्कल। अंडरस्टैंड? द आर्टिक इज इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ. Most scientists define the Arctic as the area within the Arctic Circle, a line of latitude about 66.5 degree north of the equator. Understand? The region to the north of the Arctic Circle, central of the North Pole. समझ में आया आपको कि यहाँ आर्टिक सर्कल जो है वो कहाँ होता है? नॉर्थ पोल पर। नॉर्थ सर्कल, नॉर्थ पोल पर जो है वो लोकेटेड होता है। अंडरस्टैंड? नॉर्थ पोल पे जो आर्ट इससे बिल्कुल द नॉर्थ पोल इज ऑल्सो नोन एज द, यानी कि नॉर्थ पोल को जो है हम वो आर्टिक रीजन कहते हैं। वहां पर जितने भी प्लेसेस हैं, जो भी एरियाज हैं, पार्ट्स हैं उसका, वो सब आर्टिक कहलाता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, और ये नेम जो द नाम आर्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्क्टोस विच मीन्स बियर, यानी कि ये जो वर्ड निकला है ये ग्रीक वर्ड निकला है जो कहाँ से आया है? बियर, विच मीन्स बियर। द बियर्स इन क्वेश्चंस आर नॉट polar but celestial. The great and the little bear constellation visible only in the northern hemisphere, यानी कि जो है लिटिल बियर यहाँ की जो आपको देखने में मिलेंगे, यहाँ पर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही मिलेंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ आर्टिक सर्कल पर कुल दुनिया के 7 ममालिक जो है वो इंक्लूड हैं। द आर्टिक इंक्लूड पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, इंग्लैंड कह रही हूँ, फिनलैंड, रशिया, द यूएसए एंड कनाडा। अंडरस्टैंड? ये जो 7 कुल दुनिया के 7 ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। आर्टिक सर्कल जमीन का वो हिस्सा है जहाँ सूरज मई एंड दिसंबर के दरमियान लगातार कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स कुर्रे आजम के ऊपर होता है या नीचे रह सकता है। अंडरस्टैंड? दिस ओशन इज around the North Pole. There is a vast area of the ocean called the Arctic Ocean. Understand? This ocean is not like other oceans of the world. और ये दुनिया के और ओशन से क्या है? उस तरह दिखने में नहीं है, उससे अलग है। यानी कि ओशन मीन्स आपको पता है ना, ओशन मीन्स क्या है? समंदर, बहर। अंडरस्टैंड? इट इज सो कोल्ड हेयर दैट द वाटर इज कवर्ड बाई आइस एंड स्नो। क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो होती है वो ठंड पड़ती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? इसका टेम्परेचर अलग होता है, तो ये जो पानी है वो पूरा कवर्ड हो जाता है बाई आइस एंड स्नो से, यानी कि पूरा बर्फ से, पूरी आइस से जो है वो पूरा कवर्ड हो जाता है। अंडरस्टैंड? द सरफेस ऑफ दिस आइस कैप लुक्स लाइक लैंड, यानी कि वो जो पूरी आइस होती है वो ऐसे लगती है जैसे उसकी उसकी जमीन बन गई है, पूरी एक जमीन बन जाती है, जमीन लैंड बन जाती है। अंडरस्टैंड? इट इज हाई रिजेस एंड डीप क्रेविसेस, और ये कभी जमीन का वो हिस्सा होता है, यानी कि लगातार कंटिन्यूस अजम के ऊपर या नीचे रह सके, जमीन का वो किनारा जो देखने में आसमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। इट हैज हाई रिजेस, रिजेस मीन है उभरी हुई, यानी कि ये कभी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लगता है, यानी कि हाई लेवल पर, यानी कि जब इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ जम जाती है, ये इतना ज़्यादा यानी कि जैसे कहते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजिस मतलब है उभरा हुआ, उभार आना, तो ये एक उभार पहाड़ की तरह पैदा करता है। एंड डीप कैरवेसेस, या फिर डीप में ऐसा बन जाता है कि बिल्कुल एक ज़मीन, ऐसा लगता है कि पूरी बर्फ़ की ज़मीन बिछी हुई है। अंडरस्टैंड? During the summer months, much of the ice on the edges breaks away from the ice cap. और जब समर के महीने में, यानी कि जब समर मंथ्स होता है, तो उसमें क्या होता है? ये जो आइस है ये आइस कैप से टूट टूट कर जो इसके किनारे हैं, एजेस मीन्स हैं किनारे, तो इसके जो किनारे वो ब्रेक्स अवे फ्रॉम द आइस कैप, ये दूर होकर दूर होते जाते हैं, यानी कि गिरते हैं, दूर होके गिरते हैं, दूर होके टूट टूट के दूर गिरते हैं। अंडरस्टैंड? ह्यूज आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स कहते हैं बर्फ के तोड़े को, यानी कि आपने देखा होगा ना, जो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ पत्थर होता है बर्फ का, उसे कहते हैं बर्फ का तोड़ा, आइसबर्ग्स। फ्लोट मीन्स है तैरने वाली कोई शय, जैसे हम फ्लोटिंग मीन्स तैरना, फ्लोट, सही, फ्लोट यानी कि कोई शय जो चीज होती है, थिंग। फ्लोट इन द ओशन मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप्स
टू पास, यानी कि ह्यूज आइसबर्ग्स या बर्फ के जो तोड़े होते हैं, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या बर्फ पत्थर की मानंद होते हैं, इतने बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो तैर रही होती हैं, फ्लोट इन द ओशन, मेकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप्स टू पास। तो इस वजह से कि जो पानी के जहाज होते हैं उनको वहां से गुजरने में क्या होती है, दिक्कत, डिफिकल्टी, मुश्किल हो रही होती है। अंडरस्टैंड? Temperatures in the Arctic for the most of the year are below -23 सेंटीग्रेड। जो आर्टिक का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादातर पूरा साल क्या होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अंडरस्टैंड? Okay, students, write down question answers. First, make a title page of chapter 4 and write question number 1 in your social studies copy. Write down, okay? Question number 1. What are the two polar regions called? Differentiate between them. Answer. The Arctic Circle, North Pole, and the Antarctic Circle, South Pole. The Arctic region. The Arctic region is composed entirely of icebergs. There is little land except for the northern coast of the Asian and North American continents. The people of the region are called Inuit. Temperatures most of the year are below -23 degrees centigrade. There are polar bears in the Arctic but no penguins. The Antarctic region. The Antarctic region is a huge land mass covered with ice and snow. It is uninhabited with temperatures as low as -87 degrees centigrade. There are penguins in the Antarctic but no polar bears. Okay, students, continue question answers. Write down question number 2 in your social studies copy. Question number 2. Name the animals found in the polar regions. How do they survive in the cold? Answer. Seals, whales and penguins live in Antarctica, and polar bears, seals, walruses and whales live in the Arctic Circle. The animals in the polar regions like polar bears, seals, whales and walruses have a thick layer of fat or blubber under their skin, which keeps out the cold. Right, question number 3. Why has the Antarctic region not been inhabited? Answer. It is bitterly cold in Antarctica and the climate is dangerous, with hurricanes and blizzards blowing. People who travel here cannot bear the cold and often get frostbite. Frostbite can be so severe that people can often lose their limbs. Because of these extreme weather conditions, the Antarctic region has not been inhabited. Okay, students, this is your homework. This chapter will be continued. अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Okay, Allah Hafiz.